Hello everybody. Tabassum Sheikh wants to be in my live video. Okay, so if you want, yeah, I am the first to join. I am so happy and blessed to see that you guys wait for my live. Tabassum is here. I can talk to you and know your concern and question, and then I will put you off the live. Yeah. Okay, maybe you're not able to connect. I will wait a while. If not able to connect, then I will remove this. Yeah? How are you, everybody? Are you good? I thought change is the only constant, right? So let's change it. This time I'll call whoever wants to be at the live and then ask them their question. And they can talk to me and ask me the question. And I'll answer it. Yeah? I am here hoping, I'm waiting for your 101. Is Sina, Aparna Sina. Why waiting? Oh, because of the waiting list, is it? Yeah. Talk to my team. We are trying to expedite as much as possible. See, guys, I work with this medicine in my hand so that I don't get, that I'm fine and I don't get a bout of, coughing and all. Because post my accident, a lot of, immunity went down. So I'm doing the best I can, but I'm taking it slow. I'm taking it easy. So that's why also the waiting list has increased, okay? Because body takes time to recover, and doctor also said it's going to take you at least 1 year for complete recovery. And from December, it's been 7 months. So thank you for your patience. I can understand if you're waiting. And earlier, if I was doing 10 one-on-ones a day, now I'm probably doing only 5 or 6. So the waiting period has increased, but it's not on purpose. It's just that I'm just being cautious so that I can fully recover and be at your service. Yeah, I'm going to remove you, Tabassum, because this doesn't seem to be working. Okay. Yeah. Okay, so hello, everybody. Now it doesn't get removed also. Yeah. So कैसे हैं आप सब लोग? Remove Tabassum. Yeah, fine. Now it gets removed. Sorry, I wanted to take your question live, but it was just not connecting. I don't know whose internet was faltering, mine or yours. So very quickly, let's first today get on to what are the signs that your home therapy is working. First of all, guys, what is home therapy? Can you write that in the chat? What is home therapy? I will take time. It will take time. Acha. What is home therapy? The चश्मा लगाया नहीं है, पढ़ने की कोशिश कर रही, कहाँ से पढ़ा जाना है? Yeah, okay. What is home therapy? लिखो ना भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ बंदर नाच करने थोड़ी आई हूँ. आपने साथ में interact भी करना है, okay? If I'm doing it with bad health also, please, at least that much I expect. Otherwise, I need not do it. है ना? Good evening, Rashina. Manju. Good evening, Manju. Yeah. Okay. So, people, what is home therapy? लिखना शुरू करो. क्या होता है home therapy? हाँ, बोलो जल्दी बोलो. खाली नहीं बैठना इधर चुपचाप. Remove the other person. हाँ जी कर दिया. हो नहीं रहा था इंटरनेट इशू. नहीं, अभी मैं कुछ नहीं आंसर करूंगी प्रीति गुप्ता. पहले मेरा क्वेश्चन तो आंसर करो. हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी तो कर लेंगे, बट व्हाट इज होम थेरेपी? होता क्या है? कैन यू गाइज नॉट हियर मी? स्पेंडिंग टाइम विद सन, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चरली. वेरी क्लोज. आई एम कंफ्यूज्ड वेदर माय सन हैज ऑटिज्म और नॉट. तबस्सुम शेख. Home therapy is mother's hard work. How sweet is that? Sida, Usha, and from the heart. Ma'am, please reply. Okay. My son is 8 years old. Autism learning nicely, but his biggest hurdle is high school. पहले ये तो बताओ कि what is home therapy?
आप लोग को ऐसे है कि तुम जाओ भाड़ में, हैं, तुम्हारे सवाल को हम क्या करें, देव बस, ऐसे नहीं होगा, देव नहीं होगा. Home therapy is a connection with son and family. Preeti Gupta, okay? Yeah, so these are the various answers that home therapy is actually not even therapy. It's not therapy. Yeah, that is why I took this topic, that how do I know that home therapy is working? Because there's nothing like home therapy. You know what that is? To work their own work without any help. That is the ultimate achievement that you want, using something which people call as home therapy. What I've been doing for past 20 years. It's not even home therapy. It is effective autism parenting. Don't use the word therapy there. Okay? It's basically, God forbid, if I had a child who had diabetes by birth. So then home therapy would mean keeping a track of when my child needs medicine, injection, okay, insulin, what kind of foods to avoid, what will improve his health condition, what kind of supplements in the market, okay, how to deal with his anxiety or her anxiety, what to do if he or she faints, how to ensure that they are getting the best support. Okay, do you call that therapy? No, right? Having goals that, okay, because of my child's condition, my child should not be missing on school. Okay, what can be the possible things that can happen? Same way with Down syndrome, same way with cerebral palsy, same way with autism. So home therapy basically actually is not even a word in existence. Yeah, it is effective autism parenting, which means parenting a child with autism in a way that the child with autism will gain and benefit the most from you as a parent, right? Even as a therapist. Because the minute you start teaching concepts, academics, then you're becoming the therapist. When you're teaching language, then you're becoming the language therapist. When you're teaching them how to behave here and there and putting strong boundaries, then you're becoming the behavior therapist. When you're connecting with the child, putting all of that together like in a bouquet, okay, you are becoming an autism impacting parent, empowered parent, okay. In Hindi, SASHAKT parent. That's why SASHAKT the name. Yeah, SASHAKT means empowerment. You know, you are becoming a parent who is capable of understanding your child's condition and working with your child. That is the definition of home therapy, right? Training your child in a way that the child will be successful with life. Now, बोल तो दिया आपने आसानी से कि ये इसमें करना क्या क्या होता है ना? So this is where my 5-finger model, I don't want to call it revolutionary. It is the least that we parents should be doing. Yeah. Cut down behaviors. Now we'll have to learn how to cut down behaviors. Improve language. Again, we'll have to learn how to improve language. Systematic way. Okay? Because your child is not going to learn the way your neurotypical child will learn or other children will learn. And वर्मा जी का बच्चा इतना अच्छा बोलता है, तू क्यों नहीं करता है, इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है ना? वर्मा जी को जाने दो. भगवान ने वर्मा जी के लिए एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स चुना है. ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स में मत घुसो, तुम भस्म हो जाओगे. यू रियली डोंट वांट वर्मा जी प्रॉब्लम्स. ओके, कान को हाथ लगाओ, शुक्र है भगवान वर्मा जी का प्रॉब्लम मुझे नहीं है. तुम्हें पता नहीं है अंदर खाने हर वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी को कितने तकलीफ है. ओके, जो है ग्रैटिट्यूड में रहो, खुश रहो. ठीक है. सो नो कंपैरिजन ऑफ द चाइल्ड, टीचिंग बिहेवियर्स यूजिंग ऑटिज्म स्पेसिफिक बिहेवियर करेक्शन टेक्निक्स. हमें कौन सिखाएगा जी? तो अभी दवाई ले ला के ही सही, जिंदा तो है, सशक्त चल रहा है, पूरी सिस्टम है, और कहीं बाहर नहीं कोई मिल रहा तो यहाँ आ जाओ. बाहर भी बहुत लोग होंगे, ये तो नहीं कह रही कि सिर्फ हम ही हैं, है ना? दुनिया बड़ी बड़ी अच्छे लोगों से.
बुरों से भी पर अच्छों से भी, तभी तो चल रही है। सिर्फ ही बुरे होते तो खत्म हो जाती, राइट? सो यू विल टीच बिहेवियर करेक्शन, you will teach language development, you will teach social skills after language is developed. Somebody was asking, Preeti was asking how to develop language. We'll come to that. Okay, you will teach social skill development. Okay, teach development, no, you will teach social skills, you will develop social skill, you will work on social skill development. Okay, then you will teach them independent living skills. Okay, my son, now he's back from Delhi. He's pursuing MBA. The course starts August end. Yeah. So basically September beginning. Everything is done, paperwork, everything. All he has to do is now start going to college, but the course starts August end. We want him to live in a separate house, right? So now the home therapy, why? We don't like him here or we have extra money to throw? No. He has to learn to live when I'm not around, the dad is not around. So even the smallest thing, how to hammer the nail properly and how to put things, okay, how to check if the gas cylinder is leaking, then call up the agency and say, replace the cylinder because I put water and it went bud, 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 bud. This is what recently happened. Okay. He learned a great deal in Delhi and now it's the next phase of learning. So home therapy started at 2 years, 10 months, hasn't ended yet. He's 23 and shall continue until I'm capable of doing pranayama. Yes. So now cut down behaviors, develop language the way it's supposed to be developed. Okay, using scientific techniques. ओ जी हम थेरेपिस्ट नहीं है, shut up, enough. अगर भगवान ने तुमको चुन लिया ना बच्चे को तुम्हारे पेट में डालने के लिए, तुम्हारे घर में भेजने के लिए, तो अब ये बकवास करनी बंद करनी पड़ेगी हमें. हम थेरेपिस्ट नहीं है. तो जाके भगवान को पत्थर मारो और उसी गुरुद्वारे में मंदिर में छोड़ के आओ कि रख लो, नहीं चाहिए था. है अगर हिम्मत तो, और नहीं है ना तो काम करना शुरू करो. ठीक है. सो देन सोशल स्किल्स सिखाएंगे ताकि दोस्त बना सके बच्चा, अकेला ना रह जाए. लाइफ स्किल्स सिखाएंगे ताकि अकेले रहना सीख सके, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना सीख सके. ठीक है. और फिर एकेडमिक स्किल्स बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लेवल से सिखाएंगे, उसके स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल्स के लेवल से सिखाएंगे. पर जी ये तो डिसेबिलिटी है. क्यों? किसने आपको बोल दिया? जिन्होंने आपको बोला उन्होंने 20-30 साल रिसर्च में लगा करके बोला. उन्होंने आपको प्रूफ दे करके बोला कि भाई इतने सालों तक काम किया गया मगर एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, एक भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, ऐसे बोला उन्होंने? डिड दे से दैट टू यू? What right as a parent you and I have to believe in the word disability? Understand this from a very practical perspective. Somebody, God forbid, lands up in an accident having a hand cut. Hand cut. Now there are about 8 billion people, little less than 8 billion people on planet Earth. In 8 billion people, will there be one case whose hand will start growing on its own, not prosthetic? It start growing, then it will have fingers, then it will have everything. होगा क्या ऐसा? हाँ, एक केस होगा क्या? नहीं होगा ना. So that is a confirmed fact कि ये नहीं हो सकता क्योंकि 8 बिलियन केसेस में कोई एक भी नहीं है ना. लेकिन ऑटिज्म के साथ ऐसा है क्या? सामने से पूछ रहे हो. 8 बिलियन में कोई एक भी नहीं है जो सीख गया, जो इंडिपेंडेंट हो गया, जो नौकरी कर गया, जो शादी कर गया, जो लाइफ को निभा गया. एक भी नहीं है क्या? अभी मैं क्या कर रही हूँ तो तुमको ऐसे सवाल पूछ रही हूँ, ना इधर निकल पाओगे ना इधर निकल पाओगे, मैं निकलने नहीं दूंगी. तो अगर हैं लोग जो ऑटिज्म के साथ सक्सेसफुल हो गए तो आपके बच्चे ने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं कि उसको ये अधिकार नहीं है कि वो सक्सेस हुए? बस इतना सा जवाब दे दो. ऐसा पेरेंट बन के जाओ दुनिया से कि आपका बच्चा जाने के पहले सल्यूट करे कि थैंक यू गॉड, आपने ये इंसान मुझे एज अ पेरेंट दिया और उसे उतनी समझ हो, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को इतनी समझ आ सकती है.
तब हमने अपना फर्ज एज पेरेंट्स निभाया, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं। हमने जी बड़े पैसे खर्चे, हमने जी एच बॉट कराया, हमने जी चिलेशन कराया, हमने जी उसके गट क्लीनिंग कराई। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या टाइम पास कर रहे हो? स्टार्ट ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग टुडे। रजनी बहुत बदतमीज है, कोई बात नहीं, हम इसके प्रोग्राम पे नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दूसरा ढूंढ लो जो आपको ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग सिखाए, बहुत सारे होंगे, है ना, जेन्युइनिटी चेक करके। लेकिन भगवान का वास्ता, लर्न ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग, okay? Because it's not about Rajni, it's not about my organization, it's about your kid. You need to understand, if you don't know home therapy, autism specific parenting, then you are not succeeding with it. It's going nowhere, because the highest amount of time the child is spending with you, you are the center focus of the child's life. And if there's any permanent, sustainable, long-term, irreversible change that can be brought in the child, my dear darlings, it is you who can do, not an outside therapist. They can be somebody returned from US, highly qualified, from England, knowing all that they know, to all I care. But the child doesn't live with them. So for the child to learn on a daily basis, it has to be you. And if you learn, it's not very difficult. You can do it, right? Now, how do you know home therapy is working? Okay. I have to take your questions and I'm talking too much, but yeah, okay, fine. It's 7:15. I'll take your questions also. How do you know home therapy is working? Your child is at a lag, okay, is at a lag, but the lag is not more than 20, in an extreme case, 30% from other children, his age or her age. Now, so many parents will say, my child is doing very well. Very good. He's 14 years. Yeah, he can do all ABC. He can write 1, 2, 3. 14 साल का लड़का क्या क्या करता है? उसको पीरियोडिक टेबल आते हैं, आप क्या कह रहे हो? ABC कर रहा है, 1, 2, 3 कर रहा है, कैट मैट वैट पढ़ भी लेता है. He's doing exceptionally well. He's doing very, very well. तो आपका स्टैंडर्ड, आपका बार आपने कहाँ सेट कर दिया? आपका ब्रेन तो ऑलरेडी उसको एज डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड एक्सेप्ट कर चुका है. तो आप कह रहे हो कि 14 साल का हो गया है और वो रीडिंग ये कर रहा है. So excuse me, कहाँ ही पहुंचेगा ये बच्चा? So know what to expect from autism. Autism is not mental retardation. It is not. Yeah. So what is autism? Autism is a different wiring of the brain. The child will stick to what they want to do unless you break it and introduce them to other things. They will not learn language unless you create mental pictures and teach them step by step, like the what, who, where, when, why, and how, and then the intermatching, like the inter, not changeable, what should be the use? What should be the word? मैंने सबको एक साथ मिला करके, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, सबके वर्ड प्ले के साथ में, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस बना पाना. जैसे अभी रजनी आपको बोल रही है, कहीं लिखा थोड़ी हुआ है. सो ब्रेन कुछ कह रहा है, वो मुंह से किसके पीछे क्या लगाऊं, किसके पीछे क्या लगाऊं, वो ऐसे बात कर सके, ऐसा थोड़ी होता है ऑटिज्म में. प्लीज, आपको पहले यहाँ मेंटल कंडीशनिंग चेंज करने की जरूरत है. ऐसा होता है ना. और हमेशा याद रखना ये एग्जाम्पल कि अगर नहीं होता ना, तो जैसे किसी का हाथ यहाँ से कटा और 8 बिलियन के 8 बिलियन लोग का हाथ ग्रो नहीं करता, तो 8 बिलियन के 8 बिलियन में जितने ऑटिस्टिक होते हैं वो कभी बात नहीं कर रहे होते. वो तो जी लेवल होता है. तो लेवल लो से हाई नहीं होगा, इस बात का कौन सा आपके पास में स्टैम्प पेपर, कहाँ से, कौन सी नोटरी से लिखा के लाए? नहीं, लेकिन वो तो उसको तो मेंटल रिटार्डेशन है, फिर नहीं होगा. या the first demons you are going to fight are your own self, which is scared of dreaming, because if I fail, it will hurt me. But you know,
all the success is beyond your comfort zone. You have no idea of how scared I feel when I make goals for Jay. To this date, now I'm making a goal that he'll have a wife, he'll have children, he'll go to their PTMs, he will be able to. How? I don't know. But I'm willing to learn. And just like I came this far and I've learned, I will go forward and learn that also. And universe and Mahadev will send that learning to me because I am ready to learn. I am ready to accept that my son is capable of doing everything that anybody else is doing. Right? आज तक उन्होंने मुझे let down नहीं किया और हमने इतना कुछ create किया तो आगे क्यों नहीं? आगे क्यों नहीं? So it's first a mental battle. Okay? Get rid of that. और देख लेना आप लोग. Those of you who will be connected with me. Is 23, 10 years down the line, he'll have one baby. He'll have a family. If we are still connected. I'm telling you this. Yeah? तब बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत high functioning था. Huh? The point here is I'm planning already. That's why he's going to stay separate. Slightly away where I can reach him in 5 minutes. Because he needs to know what all to learn to stay separate. We have to be futuristic in our thought process. Keep the gap minimal. Learn first so we can teach. And most important, above everything else, ensure that the gap is less than 20% or maximum, if we are terribly late, 20% to 30%. इसके ऊपर का गैप हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. अगर है तो भैया दिन रात सुबह दोपहर शाम काम करना शुरू करो. तो फिर थेरेपिस्ट किस चीज के पैसे लेते हैं? तो कैंडल मार्च निकाल लो. बच्चे की उम्र तो रुकेगी नहीं. मैं तो इतनी महान नहीं हूं कि अपने बच्चे की सक्सेस को सैक्रिफाइस करके कैंडल मार्च निकालूं ताकि आने वाली जनरेशंस को फायदा हो सके, थेरेपिस्ट अपना माइंड बदल सके और मेरा बच्चा स्वाह हो जाए. नहीं जी, तो जब होगा होगा, जब गवर्नमेंट सुनेगी सुनेगी. आज मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है तो मुझे सेल्फिश होना ही बहुत है ना? सही जगह पे सेल्फिश होना सीखिए. ठीक है? अगर आई हैव टू ज्वाइन अ कैंडल मार्च and I had to teach him skills. Between the two, what do you think am I going to choose? I know. I'll join the candle march, but that will be my priority number 2, not 1. Priority number 1 is पहले तुझे सिखा लूं, फिर टाइम निकाल के उधर जाऊं. Right? So, what I mean to say is किसी के लिए क्रिब नहीं मारना है. ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, भाई कर रहा है तो भला है तेरा, नहीं कर रहा है तो भला है तेरा. मैं इतना सीख लूं कि उसके बाद अगर मुझे दिखे कि तू नहीं कर रहा तो मैं तेरे को सैक कर दूं. You are the CEO of your house. So if a therapist is not working, you sack them. That's called power, right? But then the CEO must know what all is going on. No. Victim mode mein to hoga nahi. The best way to find out if your home therapy is working is to see that your child is managing in the same class. So, as I said, about 20% of gap or 30% of gap. ठीक है? मतलब 100 में से 70 एक नंबर उसके आने चाहिए. Academics में हर तरफ नहीं कह रही because they may be absolutely not too good with math. So आप उस पर फोर्स करते रहेंगे. जिंदगी में 100 में से 70 आने चाहिए, 80 आने चाहिए. 7 वाले शर्मा जी का बेटा अगर लिफ्ट के अंदर जा रहा है ऊपर नीचे और वो 10 साल का है और मेरा 8 साल का है, तो मैक्सिमम 1 साल और जाने दो. 9 साल का होके तो उसे लिफ्ट में आना जाना आना चाहिए ना, है ना? अगर वो 8 साल में शुरू हुआ था, चल साल भर का गैप दे लेंगे. अगर 7 वाले गुप्ता जी का लड़का जाके दुकान में जाके पूरी बहस बहसाई करके, अरे अंकल जी आपने ये स्पॉइल्ड चिप्स दे दिया, इसको वापस करो फलाना फलाना, तो मेरा उससे 2 साल बड़ा लड़का कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि ब्रेड चाहिए, ये लो पैसे. थोड़ा गैप चलेगा, मगर कितना गैप? 14 साल का है, एक्सेलेंट कर रहा है, एबीसी रीड कर रहा है, 1 2 3 रीड कर रहा है, इज अ नो. प्लीज
आप इमॉर्टल नहीं हो, 500 साल नहीं जीने वाले हो। सो प्लीज जाग जाओ वक्त रहते, ठीक है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो मैं अभी ले लूंगी, ठीक है, जो मैं ले सकती हूँ, बट दोज वुड ऑल्सो भी, कितना गंदा किया मैंने चश्मा, दोज वुड ऑल्सो बी just theory. We are going to have our 3-day elaborate boot camp where we are going to teach. पहले हम मास्टर क्लास करते थे 2 घंटे की, अब भैया हम करते 3 दिन का बूट कैंप। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि 2 घंटों में लोग नहीं सीख पाते थे, है ना। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स डू अ बिगर प्रोग्राम। सो इट्स गोइंग टू बी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेज क्या क्या, 31st, 1st और 2nd, ठीक है। प्लीज वफा निभाएं अपने बच्चे से। पहले मैं कहती होती थी अगर सही लगे आ जाएं, अब मैं कहती हूँ वफा निभाएं अपने बच्चे से। डीएम करें हमें, वी सेंड यू द लिंक, ओके। पर मुझे फलानी जगह जाना है, अगले हफ्ते चले जाना। लर्न बिकॉज योर चाइल्ड डिजर्व्स यू टू लर्न, है ना। क्योंकि अभी तो पहला ही स्टेप नहीं है जब आपको ही नहीं आता। अरे तू रहने दे तेरी सेल्स करनी, हमें यहीं सिखा दे। हाँ, मुझे पता है दिलों में क्या चलता है। So I'm again saying, give your child what your child deserves. Be there, okay? Write down, DM to us. Write down in the chat, all of you who are committed enough to take this forward. And DM to us boot camp so we can send you the link. ठीक है? Postpone all your programs like I care. हाँ? Because हमें नहीं आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े हम 30 मार खाएं कि आज देखा और आज आ गया। तो हमें रिपीटेडली लर्न भी करना पड़ेगा। जितनी मिस्टेक्स मैं करती हूँ, तौबा आज भी, तो लर्न करने में एफर्ट भी जाएगा, टाइम भी लगेगा, है ना। तो कहीं तो स्टार्ट करोगे कि नहीं, कि स्टार्ट ही नहीं करोगे। नहीं करोगे तो एज तो बढ़ती रहेगी, विच इज अ डेंजर साइन, है ना। सो डीएम अस और टाइप करो चैट में आई, एंड देन डीएम करो हमें, ओके, ताकि हम लिंक दे सकें। चैट में नहीं दे रहे, हम वहां देंगे, क्योंकि चैट में फिर मिस विस भी हो जाता है, कभी मेरी टीम है नहीं है, ओके। डीएम करो बूट कैंप, ताकि हम वहां पे आपको लिंक दें। बहुत नजदीक है ये, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे होगा 7 to 9:30 रात को, और संडे होगा मॉर्निंग 10 से 2 o'clock तक, ठीक है। तो अब ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस एक एक करके। My son is 8 years old. MILF autism. MILF, ये नहीं पता क्या होता है। Autism learning nicely, but his biggest hurdle is high school anxiety. Can't perform learned things outside home. Very expressive at home, but gets mute outside. Jayashri Panda. Jayashri, understand what's happening. What he's learned at home, you are only looking at the key skill. Okay. Outside world will not work like that, right? Understand. You taught him. You put the seed in the soil. You put water. Seed comes up. Seed has germinated. Okay. A little sapling comes up. You taught them. But when you are asking them, you are saying the full sentence, they are providing the, this is what happens with the absence of autism specific teaching techniques, right? Or even if you're saying a sentence, because you're one person, the way you talk, your style of talking is like, some people will say, hello, excuse me, I don't do one word. How do you know? You don't live in my house. So possible you're doing full sentence also, but your style of talking, yeah, is the same and will be the same. Like Rajni's style of talking, bindas, तुमको अच्छा लगे ना लगे, सच बोल के साइड में हटना. So Rajni's style of talking is different. Somebody else's style of talking is different. Your child gets used to your kind of style of talking. Do you understand, Jayashri? Right? They are able to answer. They have also developed a reasonable amount of
how to give you the answer which you understand. When they go to high school, very simple example. At home, parent says, what is my name? And the child says, okay, let's say Vijay Prabhakar. They're taught that when I ask you what is my name, you will say my name. Okay, pronoun reversal. This is actually what happened with one of my students. So very interesting. In the school, okay, this family which is from Netherlands. So in the school, the teacher said, who am I? Child can't tell. Guys, give me a minute. Yeah. The child could not understand the difference between what's my name and who am I. That's what is happening with your kid, that when your child is in the school, the confidence is gone because the style of talking is different, right? So you need to expose the child to a multi variety of styles. You need to teach the same concept using different methods of teaching. Okay. For example, in our EBS book, we say, what do we do with nose? And then we say, nose is meant for, and then blank. And then we say, why do we need nose? So same question asked in 3 different ways, so that the child gets to understand this in different methods and manners. I hope I could answer your your question. Yeah. Tabassum is saying, I don't know if my child has autism or not. In which case, go to a clinical psychologist or and a therapist who can, those who will help you identify. Go to a good autism center where they will. Don't stay in the dark. It's not a crime to be autistic. Please understand. It's just that we need to have proper understanding in black and white so that we can start working from day 0, not even day 1. The sooner you will have understanding, the faster you will take action, the better it will be for your child. Understand, autism is not a curse. Not understanding autism, not taking action, allowing a life to rot is a curse. Don't let that happen. Okay. We are at 7:30 and I hope I don't see any more questions here. Home therapy child can feel comfortable and stress-free. Oh, absolutely, Priyanka. This is the future of things. Use other therapists. Don't burn out. Please use them. Don't get dependent on them like a victim. That's the difference. Use other therapists is what I'm saying. Yeah. What does it mean to use? We use services, right? My foot had a problem like 4 fractures, accident. I used Apollo's services. Okay. I used their orthopedic surgeons' services. Use therapists' services. The child ultimately stays with you, works with you, learns with you. That's the big point here. Okay. Use services, then you are in control. You can ask questions to a therapist. Most importantly, ask them for IP. इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान. आपने क्या आईपी बनाया, और रिव्यू के बगैर आईपी का मजाक मत करना. मजाक है वो. रिव्यू क्या होता है? पिछले महीने हमने ये गोल्स लिए, ये हमारी अचीवमेंट थी. अब आप अचीवमेंट थी तो बोल नहीं रहे, आपने बोला ये गोल्स लिए, उसके 2 महीने के बाद आपने बोलना ही छोड़ दिया. कहेगा आईपी. हर महीने मीटिंग होगी, ये गोल्स लिए थे, ये अचीव हुए, ये रह गए, ये जो रह गए इनके लिए हमारी क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है. और अगर आपका थेरेपिस्ट ऐसा है जो ये कर रहा है, डोंट लीव दैट पर्सन फॉर लाइफ, बिकॉज वो आपको चाहिए. अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो बिकम दैट पर्सन.
जैसे हम आईपी सिखाते, मैं तो पीछे लगा देती हूँ टीचर्स को हमारे सिस्टम में, हो जाओ, गोल पूरा हुआ कि नहीं. That's the only way I know to be loyal to your kid, just like I've been loyal to my kid. It's been hard, but very rewarding. Yeah. I'll see you guys at the boot camp, Friday, Saturday, Sunday. You know, learn, because that's the least we can do for our children. Yeah. DM us, we'll send you the link.